Now, before I even announce the course, I want to talk to you about the subject itself. अब ethics एक ऐसा subject बन गया है जिसको हमने what I have noticed from 95% of my own students and other aspirants like you, that you've put ethics in a category where we'll do it जब time आएगा. अपने प्रीलिम्स और मेंस के बीच का जो टाइम आएगा उसी में हम करेंगे. एक ही बुक से तो करना है, उसी से हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी. इसको स्कूल का इलेक्टिव बना दिया है जिसमें जब करना होगा तब करेंगे, फुल मार्क्स आ जाएंगे. बट you've seen that the subject itself, when you do a deeper study for aspirants who've given this exam once before, you would understand that ethics itself is a very, very analytical subject. All the questions that are asked in ethics, there are barely any static portion inside it, and most of them require you to give your own understanding. एंड यहीं से हमारा सबसे पहला मिथ स्टार्ट होता है एथिक्स का, कि एथिक्स एक ही बुक से करेंगे, उतने ही टाइम में करेंगे, हम सब समझ जाएंगे. नहीं होगा ऐसे. यू वोंट अंडरस्टैंड एथिक्स इफ द ओनली थिंग यू वांट टू डू इज रोट लर्निंग. एंड दैट इज द सेकंड मिथ ऑफ एथिक्स, कि हम उस बुक में जो भी है सब कुछ रट लेंगे तो हमको पता चल जाएगा एथिक्स में कैसे आंसर देने हैं. What you're trying to decide is what is the right or wrong answer to an ethics, whereas ethics is trying to ask you, what do you think you should do? Not what your book is saying that you should do. And ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का टाइम ही नहीं देते हम एथिक्स में. एंड देन उसके बाद हम चले जाते हैं केस स्टडी हैक्स ढूंढने के लिए, क्योंकि हमने अंडरस्टैंडिंग तो बनाई नहीं. We didn't even understand what a particular moral philosopher is trying to say, or why is someone disagreeing, why one philosopher is disagreeing with another philosopher. We didn't go and do thought experiments. We didn't try to understand what values. We've read what values a civil servant should have, but I myself have not understood what they mean. I've done it from the examination point of view. Now, if that is the rote learning that you've done, then how are you supposed to give answers to case studies? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जाके बहुत सारे वीडियोस देखेंगे जिसमें हमको एनालिसिस मिल जाएगा कि इस टाइप की केस स्टडीज में ऐसे आंसर कर दीजिए, उस टाइप की केस स्टडीज में आप वैसे आंसर कर दीजिए, थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड कंक्लूजन दे दीजिएगा, थोड़े बहुत फिलोसोफर्स के नाम डाल दीजिएगा, तो आपका केस स्टडी डन है, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे. यू सी हाउ रिडिकुलस इट साउंड्स, बिकॉज दैट्स नॉट हाउ इट इज सपोज टू बी डन. If you don't even understand what moral values, what virtue, what morality, any of this means, how will you even understand case studies where the examiner is asking you your answer? You think the examiner, while checking the notebooks, can't find similarities between answers? एक ही क्राइसिस में दो लोग सेम आंसर दे देंगे, ऑब्वियसली देंगे. वही एक ही वीडियो देखा है, वही यूट्यूब से वही चीज करी है, अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप करी ही नहीं है. एंड देन फाइनली द बिगेस्ट प्रॉब्लम व्हेन इट कम्स टू एथिक्स इज दैट यू थिंक एथिक्स एग्जिस्ट इन अ साइलो, कि ये जो 250 मार्क्स का पेपर है वो उतने में ही एग्जिस्ट करता है, उसके बाहर इसकी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है. बट इफ यू गो एंड लुक एट द सिलेबस ऑफ एथिक्स इटसेल्फ, यू रियलाइज दैट एथिक्स में हर एक पॉइंट is going to help you not only in mains, not only in your interview, but other exams and your life beyond when you qualify this examination and enter the services. The ethics has portions of moral philosophers, of you understanding what their philosophy was, what they thought about, to understand what sort of a behavior you should have when it comes to crisis. And this is what will help you give answers to philosophical essays जो अब यूपीएससी भर भर के पूछ रहा है. Same thing happens when it comes to governance. If you look at the syllabus of ethics, you'll understand the ethics itself is divided in 3 parts. One part talks about ethics, values, and morality. The other part talks about psychology through aptitude, attitude, and emotional intelligence. And the third part, the most important part, talks about governance and public administration. So all these things is going to help you do the other questions really well. And also create an understanding so that tomorrow when you're sitting in front of an interviewer who's trying to gauge your aptitude, वो आपका एप्टीट्यूड देखना चाहते हैं कि आप सिविल सर्वेंट बनने के लायक हो या नहीं. वहां पर अगर आपको अपनी मॉरल स्टैंडिंग ही नहीं पता है तो आप कैसे आंसर देंगे, राइट? एंड दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू. You and I are going to do a complete course on ethics right here on YouTube. Now, the reason I've chosen YouTube as the medium is because, number one, I want to provide this whole course right here. A complete course of ethics that you can revisit, watch, and analyze whenever you want. And the second thing is, my classes are not going to be a class full of dictations. The idea here is that every single class is going to be an active class where I want you to be an active participant. You listen to it, you understand it.
ये आराम से बैठ के पैसिव लर्निंग कर रहे हैं, देख रहे हैं बैकग्राउंड में वीडियो चल रहे हैं, ऐसा नहीं करना है. आप पॉज कीजिए, आप नोट्स बनाइए. We will have a complete discussion on when we right before starting the course, we'll have a complete discussion on how you're supposed to take the course itself, how you're supposed to take the notes. But my whole idea is to provide a complete class in itself where you're involved in taking notes, where you're involved in not trying to memorize things but understand things. And then finally, we will also include certain answer writing portions, certain discussions, live Q&As as part of this course itself. So I can't wait to go ahead and start this course with you guys and give you exactly the type of understanding that you require when it comes to the subject. I hope to see you in the next video where we talk about the complete syllabus of ethics and what the UPSC is demanding. I'll see you in the next video.